Good morning, everyone. I hope you all can hear me and see me clearly. Please write yes in the chat if I'm clearly audible and visible. Nikun sir, I've sent requests to you to join the stage. Please accept that. Thank you for the confirmation, Anilji. Good morning, everyone. We'll start the session soon. Nikun sir, I hope you can hear me clearly. Yes, Anuj, am I audible? Yes, sir, you are clearly audible. You can take a minute to settle Okay. down, share your screen, and then we'll start the session. Sure. Morning, everyone. My name is Anuj Sharma. I am the community manager working at Motilal Oswal. You see me almost daily hosting these kind of sessions. For today morning session, we have Nikun sir with us, who will be taking up this free live session. And we'll start with the market outlook, support resistance, and then we'll move towards the intraday trade for the day. And if we, need some time to analyze the trade, we'll go towards the stock queries. So feel free to drop your queries in the chat, and we'll be happy to take them up. If your queries are not answered here in the chat, please drop them on Stockomo. We'll be happy to take it up from there. So, Nikun sir, we are all set. Please turn on your camera. Yes, sir, you are visible. We are good to go. Over to you. Sure. So good morning, Anuj. Good morning, everyone, for joining in and welcome to the morning session. So start करते हैं market outlook. So the major headline index, which is Nifty. So Nifty, as we when we last met, we did discuss that Nifty एक range में है, नीचे में 22,222 and 22,300 immediate support है for the time being, and ऊपर में 22,600 650 एक resistance point है. So this is for the immediate per se. This is for the week, which is today and tomorrow. Tomorrow being the Nifty weekly expiry. तो ये एक range है, 22,222 नीचे में support है, 22,300 22,222 and ऊपर में 22 550 650 is the immediate resistance point. तो ये 200 300 पॉइंट का एक रेंज है एंड इट शुड कंटिन्यू टू ट्रेड विद इन दिस बैंड. नीचे में सपोर्ट आ रहा है एंड ऊपर में एक थोड़ा सा हर्डल है. तो a range bound move will continue for the time being. नीचे में crucial support थोड़ा सा broader time frame देके for 1 2 3 weeks per se. तो नीचे में 21,800 21,750 is the support. ऊपर में 22,800 and 23,000 are immediate resistance point. 22,800 जो previously एक strong support हुआ करता था for Nifty, which as per the change of polarity अब एक strong resistance का काम करेगा. तो जब तक पोजिशनली और डायरेक्शन वाइज जब तक 22,800 22,850 के ऊपर क्लोज नहीं आता है तब तक एक range bound move रहेगा and broader range would be this 800-900 points and immediate range within that range of 800-900 points. ये एक रेंज रहेगा 22,222 नीचे में 22,300 ऊपर में 22,550 650 एक हर्डल पॉइंट रहेगा. तो नीचे में आता है तो सपोर्ट बेस्ड बाइंग थोड़ी सी आ जाती है और ऊपर में थोड़ा सा हर्डल है. तो ऊपर में मोमेंटम नहीं बन रहा है, नीचे में लाइकवाइज स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं आ रही है. तो ये 300 पॉइंट्स की रेंज शुड कंटिन्यू इन निफ्टी, wherein 22,222 300 should be the support where you can see some pullback coming in and ऊपर में थोड़ा सा profit taking near 520 to 550 and 650 zones पे थोड़ा सा profit taking आ रहा है. तो कल निफ्टी ने काफी आउट परफॉर्म किया है एंड नॉट ओनली कल, लास्ट if we look at from 4th March, that is 7 trading sessions say Nifty has outperformed Bank Nifty. Nifty from the lows which are recent lows of 21,950 वहां से 22,670, so almost 700 points का एक move आया है. If we compare the same with Bank Nifty, so Bank Nifty ने भी अपने recent lows से hardly 600 points का पुल बैक देखा है. तो जबकि बैंक निफ्टी इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ निफ्टी, सो रिलेटिवली अंडर परफॉर्मर है. हालांकि आज थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है wherein Nifty is lower by 30 points but Bank Nifty is up by 250 points. So बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो कल का लो दैट इज 47,700 इज वेरी क्रूशियल एंड ऊपर में जो कल का गैप डाउन एरिया था विच इज 48,150 एंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ 48,350 400 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट. तो अगर ये चार्ट को थोड़ा जूम इन करूं तो इफ यू सी द ट्रेंड लाइन, तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन दो ट्रेंड लाइन से देखें तो नीचे में 47,750 के आसपास एक सपोर्ट है बट इमीडिएटली ऊपर में 48,350 के पास हर्डल है.
तो ये 500 पॉइंट की रेंज रहेगी, वेन इट में ऑसिलेट विद इन दिस रेंज फॉर दिस वीक। अगर थोड़ा सा 1-2 वीक्स का टाइम हराइजन देके तो नीचे में 47,500 एंड ऊपर में 48,750। सो ये 900 to 1,000 points in Bank Nifty is the broader range, and within that broader range there is a smaller range wherein 47,750, 700 and ऊपर में 48,250, 350 is the resistance. तो 400-500 पॉइंट का ही बैंड है वेरिन इट इज ऑसिलेटिंग। गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ी सी रिकवरी आ जाती है, वेरिन कल हमने देखा कि शार्प गैप डाउन ऑन द बैक ऑफ थोड़ा सा इंडसइंड में पेन दिखा था इस वजह से। बट द अदर प्राइवेट मेजर्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक केम इन एंड ट्राइड टू लिफ्ट द इंडेक्स फ्रॉम द लोअर साइड। तो नीचे से थोड़ी सी पुल बैक आ रहा है, बट ऊपर में अगेन थोड़ा सा हर्डल है विच इज 48,350 के आसपास। So ये 500 points की range in Bank Nifty and we need to play this range only. So ये था इंडेक्स के बारे में अपडेट। I think अगर कोई इंटरडे ट्रेड, I think one stock which is looking very good is we have also flashed it on terminal is Crompton. So Crompton is very is looking very good on the as a intraday, purely intraday trade, wherein it has given a range breakout on a daily scale and आज gap up खुला है, तो I think this gap area should work as an immediate support. So what we can do is we can do an intraday trade setup in Crompton Greaves. Purely intraday, I keep mentioning you can buy at CMP that is 351 half and buy till 350, keep a support of 343 and look for target towards 362 and 365 on the higher side. So Crompton Greaves is one stock which is relatively outperforming. एक पोल एंड फ्लैग जैसा ब्रेकआउट आया है व्हेन इन स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड 4 दिन का कंसोलिडेशन के बाद आज गैप अप से खुला है, तो दिस मोमेंटम शुड कंटिन्यू ऑन द हायर साइड। सो 343 के सपोर्ट से purely intraday trade Crompton Greaves 343 is the support and look for target towards 362 and 365 on the higher side. So Crompton Greaves की intraday के लिए बाई की सलाह रहेगी 343 के सपोर्ट से look for 362 and 365 on the higher side in Crompton Greaves. So one trade we have shared in the stock which is purely an intraday play. So and I keep repeating that जो intraday trade है, try to close it on intraday max by 315. Don't carry intraday trades. If any positional trade रहेगा तो we do mention that it's a positional trade or CDI trade or a 4-week focus trade. तो जो time horizon रहेगा जो stock का will definitely mention with the stock idea so that it is clear that CDI idea है तो it is for 5 to 7 days and 4-week focus है तो it's a name is a self-explanatory. 4 weeks is 1 month का trade. So this is purely intraday. 343 के support से look for 362 on the higher side. So I think this is one trade setup. Even Nifty थोड़ा सा recovery आई है, Bank Nifty आज थोड़ा सा outperform कर रहा है, mainly led by HDFC Bank and ICICI Bank. We see HDFC is up by 1.7% and even Kotak Bank is doing well. So though private major banks are trying to support the Nifty, Bank Nifty on the higher side. So we'll see कुछ trade setup रहेगा तो we'll definitely share. And in the meantime, I think I'll give you one more intraday trade wherein it's these are purely intraday trades, and so please be mindful of the stop losses and targets and position sizing according to your risk appetite. So one stock is KFin Tech. So even KFin Tech is looking good at 936, 935. We can keep a support of 920 and look for target towards 960, 965 on the higher side. So 920 के support से you can buy KFin Tech purely as an intraday trade. Keep a support of 920 and look for target towards 950, 965 and 970 on the higher side. So two intraday trades we have shared. One is Crompton Greaves and the other is KFin Tech. So KFin Tech थोड़ा सा pullback move है, so intraday के लिए ही है, purely intraday. So don't carry these positions overnight or for next day. These are purely intraday trades, so be mindful of that.
So Kifintech and Crompton are the two trades we have given. So you can do the trades as per the risk appetite, the quantity, and also the time horizon is purely intraday. So I think two trades we have given, and next view we have shared. I think the thoda sa pullback move may continue in Nifty and Bank Nifty likewise. Bank Nifty 48 350 400 के आसपास आ सकता है, and नीचे में 47 900 could be the immediate support for intraday, and Nifty 22 400 intraday support. Look for 22 580 600 on the higher side. So Kfintech and Crompton are the two trades we have given. So and we have shared the support key resistance for this week and थोड़ा सा medium term के लिए I mean 1-2 weeks के time horizon के हिसाब से as of now एक range bound है, but within this range there is volatility, so we have to do and play the volatility as the market setup wise. So I think two trades we have given, we'll monitor the trade as well. अगर कोई और trade समझ में आएगा तो we'll definitely share the same. So in the meantime, I think Anuj, if किसी की position कुछ अटकी हुई है या कहीं पे है, तो we could try to navigate their trades accordingly. अगर कोई हमारे end से if we can help them and guide their position, that Sure, will be. sir. The first query would be SJVN. Yeah, so SJVN is looking good for intraday also. अगर किसी ने intraday लिया है, अगर लेना चाहता है तो they can do it. SJVN एक थोड़ा सा sideways है, but breakout will come above 89, तो 89 के ऊपर निकल जाएगा तो we could see 92 90. अगर किसी को इंटरडे ट्रेड के लिए भी लेना है SJVN, then आज के लो के हिसाब से 86 के सपोर्ट से they can do an intraday trade. अगर if they want to buy, look for target towards 89 and 90 on the higher side. Sir, your view on Bharat Forge futures bought at 1070. तो भारत फोर्ज थोड़ा सा वीक है, बट आज कल थोड़ा सा रिबाउंड आया है, तो अगर आपने बाय किया है तो कीप अ सपोर्ट ऑफ 1040 एंड होल्ड एंड लुक फॉर टारगेट टुवर्ड्स नॉट टारगेट बट सम पुल बैक टुवर्ड्स 1100 or 1120. I think that is the next resistance point for Bharat Forge. तो अगर पुल बैक आता है नियर 1100 or 1110, then we should exit the Bharat Forge trade. अगर रहेगा तो नीचे में सपोर्ट, अगर if he wants to hold, keep a support of strict support of 1045. अगर वो ब्रेक करता है then it can continue its downward journey. Sir, JSW Energy. So JSW Energy is looking very good. एक inverted head and shoulder का एक breakout आया on a daily scale, and slowly and steadily it is making higher highs from last 3 days. तो I think अगर JSW Energy किसी ने buy किया है तो hold with the support of 490. I think it can see a move towards 540 545 on the higher side. थोड़ा सा slow रहेगा, but keep a support of 490 485 and hold and look for another 20 to 22 points on the higher side. Sir, LIC Housing bought at 573. ओके, तो थोड़ा सा हायर प्राइस पे आपने बाई किया है, बट नीचे से थोड़ी सी रिकवरी आई है, लास्ट 5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है ऑन अ डेली स्केल. तो नीचे में 518 और 520 इज दी सपोर्ट, और ऊपर में अगर 540 के ऊपर क्लोज आ जाता है, 540 या 542 के ऊपर, देन एक मूव टुवर्ड्स 560 कैन बी एक्सपेक्टेड. बट अगर 560 के आसपास आता है देन यू शुड ट्राई टू बुक आउट, बिकॉज द थोड़ा सा जो हायर टाइम फ्रेम या लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जो है द स्टॉक इज नॉट दैट ग्रेट. तो अगर पुल बैक में अगर 560 के आसपास आता है देन यू शुड लुक टू एग्जिट द पोजीशन इन एलआईसी. So your view on BEL? Okay, so BEL is good. I think recently it got an order or something as well, and नीचे में I think 268 is a good and strong support पे डिमांड जोन भी है near 268 266. तो जब तक 265 के नीचे क्लोज नहीं आता, I think you should continue to hold.
ऊपर में थोड़ा सा स्लो मोमेंटम स्लो हो गया इन दिस डिफेंस नेम्स, बट ऊपर में 282 और 287 285 के टारगेट के लिए यू कैन होल्ड, कीपिंग अ सपोर्ट ऑफ 265 ऑन द लोअर साइड. अगर 265 ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस पे, देन यू कैन एग्जिट द लॉन्ग ट्रेड एंड लुक फॉर अ better entry point near 255, 255, 257. So Zomato. So Zomato is seeing some corrective move and I think 200 कल almost 200 से घुमा है, तो थोड़ा सा और पुल बैक आ सकता है नियर 215, बट द मोमेंटम जो पहले था स्टॉक में वो नहीं है, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव बायस है. अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो इट्स अ गुड चांस टू बाई जोमेटो अगर किसी को 3-4 साल का टाइम होराइजन है तो, बट नॉट इट्स नॉट लॉन्ग टर्म. अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो keep a support of 200 and look for this pullback move towards 16 on the higher side. So I think one CDI idea we have shared, so I'll just quickly give you that. So one CDI, that is conviction delivery idea, we have shared on the terminal as well. CDI is basically 5 to 7 trading sessions holding period. So all this blue what do you say, AC manufacturers and are seeing some very good uptick, be it Voltas, be it Amber, who is a ancillary to AC manufacturing. So these stocks are looking very good, and the summer and is around the corner, and the heat waves may see some cool, what to say, good buying in all these AC manufacturing stocks. So Blue Star is one idea we have shared on the terminal as well. We can buy at CMP range 208480, or you can buy 10 points niche near 2070, ये 10-12 points की range में. Look for keeping a support of 1997 and look for target towards 2230 on the higher side. So this is a CDI idea, which is a positional idea, and we have to hold for 5 to 7 trading sessions, wherein our stop is 1997 and target is 2230 on the higher side. So Blue Star is one CDI idea we have shared, and you can do the trade as and do the position sizing because it's a 5 to 7 trading sessions. तो एक 5 से 7 दिन आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो be mindful of that. And yes, so I think we can take few queries अगर रहेगा तो then we'll come and intervene in between. Sir, view on NCC bought at 250. तो थोड़ा सा हायर प्राइस पे बाय हुए हैं. 250 is almost 60 points higher, थोड़ा सा हायर प्राइस पे बाय हुआ है, बट स्टॉक ने गैप डाउन दिया था आई थिंक ऑन 7th Feb एंड इट इज मेकिंग लोअर हाई लोज कंटिन्यूसली ऑन अ डेली स्केल. तो एक नीचे से थोड़ा सा पुल बैक मूव है, तो अगर 170 इज द इमीडिएट 170 175 इज द इमीडिएट सपोर्ट, बट ऊपर में 192 195 रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो एक रेंज में ही है. आपका बाइंग प्राइस थोड़ा सा हायर प्राइस पे है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा फॉर योर प्राइस टू कम, बट एज ऑफ नाउ नीचे में 175 176 सपोर्ट है, 195 ऊपर में रेजिस्टेंस है. गैप एरिया जब तक फिल नहीं होगा थोड़ा सा नेगेटिव बायस ही रहेगा इन द स्टॉक. So solar industries. Yeah, so solar is actually looking good. Daily scale पे inside bar का एक breakout आया है. Last 8 दिन से it is making higher highs, higher lows, so which is a very good thing. So नीचे में if I give you a support 9550 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए एंड लुक फॉर द टारगेट टुवर्ड्स 10,200 10,300 ऑन दी हायर साइड. तो आज इनसाइड बार का ब्रेकआउट दिया है, तो आई थिंक जो इनसाइड बार का लो है दैट शुड बी योर सपोर्ट, और स्टॉप लॉस अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है तो 9550 का स्टॉप, look for target towards 10,200 10,350 on the higher side.
Sir, your view on BHEL. So BHEL again PSU है but नीचे से थोड़ा सा like the other PSUs it is not performing that great but नीचे में एक base formation तो हो रहा है तो नीचे में immediate support है 185 187 का ऊपर में 200 201 is crucial अगर 201 के ऊपर close आती है then the move can get extended towards 210 214 also but नीचे में 187 और 190 is strong support अगर वो break करता है 187 then the stock may correct towards 178 तो अगर आपकी trading position है तो keep a support of 187 अगर वो break करेगा then the stock may correct towards 179 अगर 201 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो टेक्निकली एक ब्रेकआउट आ जाएगा ऑफ दिस कंसोलिडेशन व्हिच कैन टेक द स्टॉक टुवर्ड्स 210 ऑन द हायर साइड Sir, any Nifty trade? Nifty I think you can do a bull call trade in bull call spread in Nifty क्योंकि relatively better है आज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा bullish momentum है तो I think 22,500 के आसपास है अगर निफ्टी then we can do a bull call of 100 points so I'll give wait I'll just give the levels I think 22,500 का call option लेके I'll just share the costing of it. So 22,500 is quoting 82. So it's a very good trade. So 22,500 का call लेके 22,600 का call बेच सकते हैं. That is around 40 points का एक spread है. तो 60 is your target in that maximum profit in that. So 22,500 का call लेके 22,600 भी बेच सकते हैं. या छोटा spread करना है तो 22,500 लेके 22,550 का भी बेच सकते हैं. अगर 22,550 का कर रहे हैं तो the costing is around 20. So it's like 20 points का risk and 30 points का reward. अगर 100 point का spread करें that is 22,500 and 22,600 then the costing is around 35 to 38 points and your reward is likewise 60 points to 62 points. So एक bull call कर सकते हैं for this weekly expiry. तो 22,500 लेके 22,550 भी बेच सकते हैं. That is one trade. And you can do 22,500 and 22,600 also. That is the other trade. So it's up to your risk appetite. कितना costing आपको देना है and what is the maximum risk? Whether you want only 20 points risk or 35, 37 points का risk. So this is a trade you can do for intraday and for this weekly expiry. So view on ONGC. Yeah, so I think falling crude थोड़ा सा एक negative है for this oil exploration companies that is ONGC and Oil India. So crude is at 4-month low and it's near 68, 69 dollar per barrel. So which is थोड़ा सा negative for these Oil India and ONGC. So which is why the stock is trading weak. But नीचे में 215, 220 का एक support है and ऊपर में 235, 232 का एक resistance है. तो एक range bound है. Nothing great in ONGC अगर rather than if you want to be in oil and gas you can do थोड़ा सा in HPCL BPCL में देख सकते हैं जहाँ पे falling crude is positive for those companies. So oil marketing companies के लिए it is positive and I think you can shift it to HPCL or BPCL for trading per se. Sir, Crompton trade already moved from buying range. What should I do? I think अगर आपको profitable है तो you should book out or you can trail your stop loss to your cost और थोड़ा सा in the money trail कर दो. So that would be great so that you don't lose money. So that is what I would suggest. HCL Tech view for today. So IT as a whole is थोड़ा सा weak. Yes, so आज थोड़ा सा नीचे है. All the IT stocks mainly जो Nasdaq composite है which is a purely IT index it has corrected almost 4-5%, 4% in 2 days. So IT weak है. I think the weakness should continue for HCL Tech. ऊपर में एक resistance है 1560 का and अगर नीचे आज यही close आता है then it can correct further towards 1480 as well. So be mindful of your long trades in IT stocks. थोड़ी से weak है
तो अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बी माइंडफुल ऑफ योर स्टॉप लॉसेस. Sir, you view on Axis Bank. तो एक्सिस में थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन तो हुआ है, बट लास्ट 3 दिन में इट इज मेकिंग लोअर हाई लोअर लोज, तो शूटिंग स्टार करके 2 दिन से करेक्टिव मूव है, बट नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एट 1995. तो आई थिंक 1000 के आसपास इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट विद अ सपोर्ट ऑफ 980, एंड देन यू कैन लुक फॉर टारगेट टुवर्ड्स 1025 एंड 1030. सो अगर 1000 के आसपास आता है या 1005 के आसपास आता है, देन 980 के सपोर्ट से यू कैन सी some play on the long side for Axis and look for target towards 1025, 1030. So Indus Bank. So IndusInd Bank, I think for the time being, I would suggest that stay away from it. थोड़ा सा corporate governance issue है. आज कल almost 26% lower था, आज 3-4% का pullback है. I think ये जो gap down है and strong bearish candle है, it will have a long bearing on the stock. तो अगर pullback में अगर trading position है तो pullback में you should exit your longs in IndusInd Bank. अगर नहीं है तो don't try to bottom fish IndusInd Bank. Just because it is down by 20%, you don't start buying the stock. अगर प्राइवेट बैंक में रहना है तो ICICI Bank is the best bank in private major banks. So guys, that will be all for today's morning session. Thanks a lot everyone for joining in. Thank you Nikon sir for taking out time and giving us the trades. So I'm just summarizing the entire session. We have one bull call spread, we have one CDI, and we have 2 intraday trades. That is Crompton Greaves and K Fintech. Perfect. Thank you everyone. See you again soon in the next session. Thank you. Have a good day.